Dilemma in development. Poverty has remained Pakistan's legacy and its quantum has depended over the years. The country's poverty crisis is largely concentrated in its more than 45,000 villages. The real challenge is the alleviating poverty, therefore, lies in developing the rural sector. A rural belt primarily consists of the land of small farmers and landless laborer who are categorized among the rural people. About 35% of the rural population lives below the subsistence level, जिसको हम below the poverty level कहते हैं, where social services are extremely inadequate. Pakistan's economy, security, solidarity, and integrity is based on its rural sector, क्योंकि पाकिस्तान रूरल कंट्री है, which present पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, रूरल कंट्री है, which presents a dismal picture of poverty, ill health, alarming low rate of literacy, malnutrition, high population growth, poor social and physical infrastructure, low production and productivity in agriculture sector and in non-agriculture sector, unemployment, massive exploitation, and the abuse of the power by the landowners, politicians, and government officials. Pakistan is blessed with an ideal climate. अदर कंट्रीज से हम देखें कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो बहुत फेवरेबल क्लाइमेट है, बहुत आइडियल क्लाइमेट है, एंड वास्ट एल्यूवियल plains along with a river system that is capable of stimulating the highest level of agriculture production. Its economy derives and its strength is from the agriculture sector. It would not be wrong to assume that the safety, the security, solidarity, and future of this country largely depends on its villages, depends on rural areas, depends on agriculture sector. Therefore, rural development becomes the heart of Pakistan's economic development crisis. The initial focus should be on increasing agriculture production and productivity through the intensification, diversification, and commercialization of agriculture based on a sound physical, organizational, and institutional infrastructure. In Pakistan, a number of rural development programs were launched in the history of Pakistan to increase its agriculture production and productivity and to enhance the livelihood of the rural people. They were implemented with the intention of creating abundant job opportunities to improve the social and physical infrastructure in rural areas. But unfortunately, the most important element that has been overlooked in all programs is the human development. क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट हम पहले करें तो उसके बाद बाकी डेवलपमेंट की तरफ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे असरात उसके मुरतब हो सकते हैं. Successive governments have launched various well publicized programs. These includes village aid program in 50s, the basic democracy system in 60s, integrated rural development program IRDP के नाम से जो बहुत मशहूर था in 70s, the 5 point programs in 80s. तो हम देख रहे हैं कि हर डिकेड में हर 10 साल के बाद एक रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया जाता रहा. द बेनिफिशरीज ऑफ all these initiatives from the government, all these
Programs by the government were large, influential farmers who had already received patronage from the governments. कि हमने देखा कि ये अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि इन सारे प्रोग्राम्स को जो मेजर बेनिफिशरीज थे वो वही लोग थे जिनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे। तो ये बेसिक फेलुअर था इन प्रोग्राम्स का। तो जो स्मॉल फार्मर्स थे वर मोस्टली साइडलाइंड, उनको साइडलाइन कर दिया जाता रहा जहाँ पे ज़रूरत थी जिन लोगों के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किए जाते रहे। वाइल formulating the concept of IRDP, Integrated Rural Development Program, all shortcomings were taken into consideration. चूंकि ये आखिर पे लॉन्च किया गया था तो जो जितने भी पिछले प्रोग्राम थे उनकी तमाम शॉर्टकमिंग्स को मद्देनजर रख के इसको लॉन्च किया गया. दिस प्रोग्राम रिमेन्ड operational through political will and commitment for 7 years between 1972 to 1979. With the sudden change of government, the IRDP also met the same fate and was rolled back without any reason and evaluation. बंद कर दिया गया. These programs could not create the desired impact जो इस जिन इम्पैक्ट के लिए जिन ऑब्जेक्टिव के लिए ये लॉन्च किए गए वो पूरे ही ना हो सके. तो ये बेसिक डायलेमा था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स और स्पेशली जो रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम लॉन्च किए गए उन्होंने अपनी जो डिज़ायर्ड टारगेट थे वो अचीव नहीं किए. द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट उसकी रीज़न थी. नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एट द ग्रास रूट लेवल उसकी रीज़न थी. लैक ऑफ लोकल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन रीज़न था. द dearth of an empowered local government system and people centric institution including NGOs and CBOs. To sum up, इसको sum up अगर हम करें, we can say that very little emphasis was placed on integrated rural development and most of the government programs were run for the single purpose with isolated effort imposed by the political leadership from above. Little or no effort was made to evolve a leadership from the grassroots level. जब grassroots level से leadership निकलेगी तो उसको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि मेरी मेरी जगह पे मेरे एरिए को कौन से मसाइल का सामना है. Pakistan's failure relies on its rural sector as majority of our population lives in villages. तो ये जो हम टू सम एक्सटेंड ये प्रोग्राम जो फेल्यूर थे अपने फेल्यूर की तरफ गए. Therefore, steps should be taken to develop this sector on priority basis. The emphasis should not only be improving poverty alleviation, but also on introducing strategies to promote poverty eradication. कि सिर्फ हमें पॉवर्टी ही एलिवेट नहीं करनी, पॉवर्टी एरेडिकेशन की जो स्ट्रेटजीज हैं उसको भी प्रमोट करना चाहिए. द सोल्यूशन लाइज इन स्ट्रेंथनिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंश्योरिंग दैट ऑल विलेजेस आर एक्सेसिबल थ्रू रोड लिंक्स. तो ये बहुत हद तक हमें देखने में आया है, लेकिन बात फिर वही होती है कि हम कह रहे हैं कि जो फार फ्लॉन्ग एरियाज़ हैं, जो दूर दराज के रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे ये शायद प्रोजेक्ट्स नहीं लॉन्च किए गए, लेकिन जो शहरों के नज़दीकी रूरल एरियाज़ हैं, जो विलेजेस हैं, वहाँ पे रोड्स की सप्लाई की गई है, रोड्स प्रोवाइड किए गए हैं. तो ये जो लिंक है उनका रोड्स के थ्रू ये जो असेसेबल होना चाहिए. विलेज शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस with subsidized rated for the tube wells as an input of their agriculture field. Modern technology should be introduced for pre and post harvest. तो इस पे एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. Such technologies should especially be provided to small farmer at their doorstep. चूंकि स्मॉल फार्मर जो होता है उसको इन्वेस्टमेंट की उसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको एग्रीकल्चर क्रेडिट का बड़ा इशू है. तो ये इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो स्मॉल फार्मर के डोर स्टेप पे प्रोवाइड की जानी चाहिए. तो ये कुछ हमने देखें कि क्या डायलेमास थे डेवलपमेंट सेक्टर में और रूरल डेवलपमेंट में. तो उसमें हमें ये नज़र आया कि जो हमारी गवर्नेंस के इशू हैं वो कुछ हमें सामने नज़र आए और जो प्लानिंग इश्यूज़ हैं वो उनका फुकदान था.